इतना सा फर्क है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क। धूप छांव में फर्क बस इतना सा। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया। Good afternoon, friends. A very warm welcome to our Business Opportunity Over Chai. This special edition Business Opportunity Over Chai will help you to understand the greatest business opportunity that we franchise India especially brings to you. Business Opportunity Over Chai presented by management team of Franchise India, Mr. Gaurav Maria, Chairman at Franchise India Group, and Ms. Sonia Chaudhary, MD at Franchise India Brands Limited. Every day, 12 o'clock, we launch a new brand to explore new business opportunities. So for today, we have invited the 3 great iconic brands to come from the origin of Bangalore: Gabru Di Chaap, Swags, and Pocket Cafe. Gabru Di Chaap is a Hyderabad-based QSR that specializes in entirely exclusive chap cuisine. Gabru Di Chaap has grown into one of the most admired premium quick-serve restaurant chain in Hyderabad. The brand is successfully running 14 plus stores and serving a comprehensive tandoori menu including chap, kebabs, chap wraps, chap burgers, etc. To know more about this business opportunity, we have invited the co-founder of Gabru Di Chaap, Mr. Tarun. But before, I would like to invite Ms. Anurupa. Anurupa is a regional business head from Telangana in Hyderabad. Hello everyone. So Anurupa, who comes with different business industry experience, who will have the experience to picking up the right business for you. So welcome Anurupa on the platform. Now I would like to hand over the stage to Mr. Tarun. You are on mute, Tarun. I'm sorry. Thank you, Harshika. Thank you, Anurupa. Am I audible now? Yes. All right. All right. So let me just share my screen and I'll talk about a brand a little bit. But before that, let me talk about us, who are the co-founders of the brand. Hello, everyone. My name is Tarun, and I'm the co-founder of Gabru Di Chaap. I have Randhir, who's my partner and co-founder of this brand, is going to join the presentation soon. Let me start with a brief introduction of ourselves. I am an alumnus of XLRI Jamshedpur, and I have a corporate experience of more than 17 years working with companies like Coca-Cola, Genpact, IBM, and Deloitte.
Randhir is an alumnus of IIT Roorkee and ISB Hyderabad, and he has worked with Bain Consulting as a business consultant. Today, we bring you an opportunity to invest in an exciting brand that has the potential to become a pioneer in mock meat market and a nationally recognized brand. Gabru Di Chaap started in 2019 when we came up with our first company-owned store in Hyderabad with an objective of bringing soya chap to the south of India. Now the question is, why chap? So as most of you would know, chap is an extremely tasty product which is already successful in North India and is now slowly making inroads in other parts of the country. We believe that soya chap as a cuisine offers a complete range of products that are tasty, wholesome, and are liked by vegetarians and non-vegetarians alike. The biggest problem of chap industry is that today, almost all of chap outlets in the country are street side stores that don't offer much in terms of hygiene, in terms of branding, and most importantly, trust. And that's where Gabru Di Chaap comes in. Our biggest USP is to be able to cater to a large segment of population that is brand conscious and want their families to eat, at a restaurant that they can trust in terms of quality, in terms of consistency and hygiene. So Gabru aims to be the first premium chap brand of India and take this extraordinary cuisine to all corners of the country. And that, ladies and gentlemen, is our vision. Now, let me take you through our brand journey so far. In the last 4 years, despite the pandemic setting us back, we were able to continuously grow to 11 operational stores across Hyderabad and Bangalore, and with 3 more in pipeline. We have seen 25% growth in revenue year on year, and our mall stores are doing an average of 14 lakh of sales. Out of these 14 stores that I talked about, 4 are company owned and the rest are franchisee owned stores. All our franchisee owned stores are profitable and have been able to recover their investment in 18 months of time. We have clearly enjoyed the first mover advantage that we got in Hyderabad, and now we are doing the same in Bangalore as well. Our product is loved by our customers, and a high rate of repeat customer, is a great testament to our success so far. We aim to move to more cities, including Mumbai, Ahmedabad, Kolkata, Chandigarh, NCR, etc. in the next 2 years. We are also looking to expand internationally in the near future. Now, Gabru has a wide range of chap delicacies, including kebabs, wraps, burgers, meals, momos, biryani, and beverages. In addition to the chap-based dishes, we also have a large North Indian menu, including chole bhature, rajma chawal, paneer makhni, lassi, and so on and so forth. Now, without wasting any time, let me just move on to the franchisee details. And I'll talk about our business model first. Now, we have a hub and spoke model wherein we run a company-owned central kitchen for the city that serves as a back-end kitchen for all our stores in the city. Now, the stores receive the marinated kebabs, gravies, breads on the basis of their daily requirement from the central kitchen. Now, this helps in reducing the store costs by keeping less inventory at the store, lesser storage costs, and minimum staff costs, as you don't need to hire expert chefs at the store level. Now, this model also helps the brand in maintaining consistent taste and quality of our products across stores in the city. We also provide complete support to our franchisee partners in staffing, in training, quality audits, branding and marketing, menu development, IT support, and much more. Right now, let me talk about the 4 outlet models that we offer and that you can invest in. There are mall stores, mall kiosks, high street stores, and drive-in stores. The investment size and annual business potential differs from model to model. However, the payback period
or the time by which you can expect to recover your complete capital expense is less than 2 years. And that is true for all models. Now, we will understand the return on investment part more clearly in the subsequent slides. But just wanted to spend a couple of seconds here so that you can go through the slide and look at the numbers. Of course, mall stores is a little higher investment store, but at the same time, the annual business potential for each mall store is much higher than any other store that you can see. So as you can see, the investment ranges from anywhere from 15 to 25 lakhs across models. Right. So as I mentioned earlier, we provide a lifelong support to our franchisee outlets with back-end kitchen, staffing, training, and other services. And that for that, we charge 8% royalty on monthly sales. Here is the investment breakup for each outlet model, that we spoke about earlier. And this includes even working capital deposit. These are the same numbers that you saw on the earlier slide, but we have broken it up into a different cost segments. So just to take an example, say for a mall store, overall for an investment, as I said, between 23 to 24 lakhs, how the breakup comes in, it's your interiors will cost you somewhere 11 to 12 lakhs. Equipment is around 2,50,000. Franchisee fee, including GST, will be around 7 lakhs. And there'll be legal and architect's fee, which is around 30,000. Which gives you a total investment of around 22 lakhs. Now, there's another refundable working capital deposit that we take, which is basically, since, as I said, we provide all the stock on a daily basis, which we provide to you, and we invoice it at the end of the month. So to run that, to run that working capital, that this is the amount that we take, which is fully refundable. But it's your working capital that is employed in the business. So overall, your investment comes to around 24 lakhs for a mall. So this is how the breakup for each of the outlets that you can see. As I understand, these slides we can share later with our potential investors so that they can go through it in detail. All right, here is an estimated P&L for each model. Based on actual average sales for each outlet model that you can see in monthly revenue section. Now, again, let me just take one example of, say, a mall outlet so that you can understand this P&L a little better. So as I said, for in our mall stores, and our average sale, a counter sale, and this is not even an average, we have taken a very conservative sale there. Which is counter sales, we do around 11 lakhs and online sales around 2 lakhs. So overall total sale, you can estimate at 13 lakh for a mall store. Now, what are your fixed costs? Usually the rentals of malls are high. So, and usually you have to pay a certain revenue share to the mall as well. So the rent is around 3,50,000, which is an average rent that we have taken, considering Bangalore market specifically. The salaries will be in the tune of around 1 lakh. And these are other fixed costs, coal, utilities, logistics, and overall, you can expect your total fixed cost around 5 lakhs. The cost of food is close to 33%. Then there are other variable costs like packaging, the commission that you pay to Swiggy, Zomato, and 8% royalty, which again comes to around 6,50,000 as variable cost. Overall food cost, overall total cost that you incur is around 11.6 lakhs. Which gives you a profit of around 1,40,000. Now, please note that out of this, when you do a sale of around 13 lakhs, you do a profit of around 1,40,000. But as your sales keeps going up, your fixed cost remains the same. That means your profit margin keeps going up. So more sales you do, the more percentage of profit you can make. So right now, if your profit is somewhere, say, around 10 to 15%, you can even go up to 20% profit margin as your sales goes up. That's how it works in the F&B business. So as you can see, your profit per year cumulatively will be around 16 lakhs, which gives you a ROI of around 70% of your total investment, which was around 24 lakhs, right? So that means you can easily recover your entire investment in around 18 months.
But just to be conservative, we give a break-even period of around 2 years. And you can see in other models also, the ROI is almost the same, which is in the tune of 70%. Although the investment sizes are different, but of course your sales numbers are also different, and that's why your ROI is around 70% for all models. All right. Again, since we'll be able to share these slides with you post the presentation, you can go through these numbers at leisure, and you can always come back for any questions that you might have. So right now, we have captured almost the entire Hyderabad market, and now we are focused on growing in Bangalore in the coming months. And therefore, we are inviting franchisee partners who can join us on this exciting journey to grow with Gabru Di Chaap as we take it to newer heights and become the only brand that would be synonymous with soya chap in India and internationally as well. So thank you, and I'll take any questions that you might have now. Thank you so much, Tarun. Thank you so much. We are open for questioning. Anyone who is interested to know more, please drop your question in chat box, or else you can ask. So meanwhile, Tarun, I would like to know a few things from your side also. As we are doing only FOFO, right? We are not open for FOCO model. Actually, we are open to FOFO and FOCO both. We have presented only FOFO model, and we usually are interested in FOFO model only. But in a maybe a peculiar case where in a certain mall where you go and get a good look, it's a good mall, but sometimes it happens that the malls only do an agreement with the company and not with the franchisee. Okay. In those certain cases, we are open to FOCO model as well, if the investor is really interested in investing in that particular store. Okay. So then for that model, we'll have a different kind of financial sheet, right? Financial sheet will be different, but the ROI will be very similar. Okay. Very, very similar, yes. Thank you, Tarun. And Tarun, we are also having few people participated with us with their question also. I can read it in the chat box. Praveen Kumar is asking, can we add anything more than the menu? Like according to the region and area, also people are interested to put their own thought of menu. So is that permissible from your side, or is it possible for the brand to execute that? See, as a brand, we are always open to suggestions from our franchisee partners. And in the past, we have actually made changes to the menu based on our suggestions from our franchisee partners. But please understand that, it's a brand which has more than, around 14 outlets now, and we are growing. And we have to have consistency across the brand. We also want to maintain a certain brand image. So there's a lot of thought that goes into any menu addition that we do or any menu changes that we do. And whenever we change a menu, it's changed across stores, across cities. So yes, we are open to any suggestions. If it definitely adds value to the menu, why not? We will definitely do that. In case, we are not, going in a different way, from our whatever cuisine that we intend to offer, we will definitely, consider your suggestion. Thank you so much. Thank you for being so broad and open for the input you are getting. And Mr. Gorgon is asking, as of now, how many outlets are operational and where? The location and how many the counts? Okay. So as of now, as on today, we have 10 operational stores in Hyderabad, which is across, as I showed you, different outlet models, which are mall outlets, which are high streets, drive-ins. So across those outlets, we have 10 operational stores in Hyderabad. We have one operational store in Bangalore because we started a month back in Bangalore, which is, and the Bangalore store is in Phoenix Market City Mall in Whitefield. It's already doing extremely well, and we have 3 more outlets that are coming up in Hyderabad itself right now. But as we are, now the focus, as I said, is shifted to Bangalore, and we will be opening many more stores in Bangalore because Hyderabad market is more or less saturated for us. Thank you, Tarun. And another question from Mr. Kunal.
Krunal. He's asking about explain FOCO model. Right. I don't have a slide to explain the FOCO model, but as I mentioned, FOCO is very simply is where we will operate the store as a company, but you will be coming in as an investor. However, you will get a certain return on your investment on a monthly basis. So it's basically, very similar to the royalty that you are paying us right now in a FOFO model. It's the same kind of a royalty that we will be paying you. As I said, we don't do FOCO, unless it is required by the, a mall where the mall is only doing an agreement with the company. Only in those cases, we do a FOCO model. Otherwise, we are only in FOFO model. So if I'm not wrong, FOCO model can be run by the brand only in malls, right? As you mentioned. Only in malls where, as I said, where, there is no option of, franchisee getting into an agreement with lease agreement with the mall, because this happens sometimes where the malls don't really, work with the franchisee partners at all. They just want to work with the brand directly. So in case it becomes too complicated for us to, really run the brand where the franchisee is the owner, but the company is running the store. So in those cases, we consider FOCO model. Okay, thank you. And Mr. Gagan is asking again, he was are we open for North India? So Gagan, we are absolutely open for North India. However, it'll take a little time for us to, move to North India. As I said, we would definitely want to capture the markets where, there is the chaap is almost non-existent, like South of India. South India, even in, East India, West, even in West, there is not much chaap right now. Chaap as a cuisine is more concentrated in the north part of the country. We would want to capture the, locations where, we can have a first mover advantage. However, we will definitely go to North India, maybe in the next 1 year or so. I'm already getting a lot of franchisee inquiries from places like, Delhi, Lucknow, Jaipur, Chandigarh, and we'll definitely be, interested in opening them. But it will take a little time because right now we are more focused on Bangalore and subsequently we'll move to Mumbai this year. So Mr. Kunal is again asking regarding the FOCO model only. He's saying, yes, I am interested in returns. If you can provide me details of return on investment for FOCO model. All right. So Krunal, maybe we can connect, separately. Anrupa, if you'll be able to provide my contact details for all the potential investors, I can connect with, all of you, and separately we can discuss it. And I can show you the numbers as well, Krunal. Sure. Thank you. So apart from that, I'm waiting for more questions to come. Friends, please give your inputs and questions to us so that we can give you better result. So meanwhile, Tarun, I'll ask you, like, as we are planning into two models, FOCO and FOCO, right? In FOCO model, the investment what we are seeing is into 4 categories, right? Do you believe that in FOCO also will be having one as the mall one is, right? And the investment size for each model will be same. Okay, each model will be same. Yes, because it is franchisee owned, so the investment will be from franchisee. FOCO model only differs in terms where the investment is the franchisees, but the day-to-day operations are run by, the company. The stock, what we are getting regular basis, the franchisee will get from where it should become. Like everything stays the same. But, as I said, FOCO, we don't usually do FOCO. And, unless it's a, situational issue, we don't do FOCO. We only do FOFO because, as a brand, it's very difficult for us to, really have the bandwidth to run each store. And that's the reason why we are into this franchise business. Okay. We want to focus more on the product, the branding, the marketing, and ensuring that, we provide a quality across stores. So we don't really, focus too much on running stores ourselves. Okay. Thank you, Tarun. And I would like to know the royalty we are charging, right? The percentage of royalty. In that, what are the facility exactly we are giving to the franchise? Okay. Again, as I mentioned earlier in my presentation, we provide a lot of services to our franchisee owners. Of course, there's a brand that, you get to, have. But at the same time, what we really offer
is the entire back-end kitchen support, right? Where we prepare everything, right from marinations to gravies to breads and everything we provide. So that means at the store level, at your store level, you don't really need to invest too much either in storage or in inventory or in staff. You save all those costs because we are providing that back-end central kitchen for you, right? So that's a huge cost saving for each franchisee store. Secondly, we provide the staff support, right? Basically hiring of staff, training of staff, replacement of staff, and this is for lifelong. So that is again a huge, especially in food and beverages industry, it's a huge advantage if you are not really, bothered about, where to get my staff. So that again that service is provided by us. Then of course, other services like, maintaining the supply chain, giving you all the branding and marketing support. So, doing a quality audit, helping you in, making your stores more efficient through our, quality team and our area manager. So all those services are provided by us, and for that we charge a 8% royalty. So I'm pretty much clear about the points, and I hope my friends who have joined us as investors, they are also pretty much clear. So thank you so much, Tarun. Thank you for your time and explaining your brand. It is like I give you a thumbs up and all the best. Like we will do together better, and I hope to see more like investors to onboard with us and execute the brand in a positive way. Thank you. All right. Thank you. Thank you, everyone. Over to you, Hasika, now. Thank you so much, Tarun, for this wonderful presentation and discussion about the brand Gabru Di Chaap. Thank you, Anurupa. So the next brand that we are introducing now, it's Swags. Swags basically started its journey in 2016, a master child of Moise Kazani. Has been more than a brand, and it has been a fashion heaven for men's and boys. Its specialty has creating stylish, premium, and yet cost-effective designer wear, as well as bringing a refreshing change to pace to the Indian fashion industry. So for this, we have invited Mr. Mose Ali ji. He's the founder of Swags Ethnics Wear. Welcome, Mose Ali ji. Welcome, sir. Anurupa. Hello, Anurupa. Hello, sir. So, sir, please introduce yourself to us and our friends, those who have already joined our. So, myself, Moise, and I'm the founder of Swags Ethnic Wear. Swags, it's a Hyderabad-based brand, but we have our job work based in Mumbai, and the fabric source and everything we do, it's various kinds of premium quality weavers, and we personally make a sample according the way we thought or we design, and we manufacture our own products. I have been working in international market for 20 years of, I have a 20 years of experience in international market and on MNC based company. So in 2016, I came back to India, and 2019, we have launched our first store, but it's we have started ethnic wear in 2016 only. The brand name we launched in 2019. And in Hyderabad, we have 3 stores right now, which are very famous and cost effective, as it's just now the lady says that. Quality products, fitting, finishing, and every time new designs we create at a level of from we are targeting middle class to upper class also. So the designs and the concept we are maintaining 2000 products, and our specialty is also in father and son concept, which is very fast in these days. Everybody wants to be like, the son wants to be like a father and father wants to be like a son. So in that we are very special in Hyderabad. Nobody do this, not even big brands who are very old in this field. They are also not putting their hand in this, because it's very difficult, and you know, you have to keep many more matchings and colors and designs, and but we have a good source, because you know, we are having
more than 40 weavers in different kind of designing of fabric. So currently we have launched in 2019 before COVID, but it won't affected us because our pricing, our quality, and our service, it's very good. Our customer feedback is very nice. We also use the CRM based program to keep in touch with the customer relationship management program. Also, we give the points. We give them brand recall time to time through SMS, and time to time the offers we give them. Some gifts we offer them in the store. So Swaks, it's like for our customer, it's like their it's not a store, it's their own brand, and they want to wear, they want to buy only Swaks rather than to go to other stores. They never, even though the customer 40 to 60% customers, they are repeatedly to us. Even though from US also we do the video consultancy and they give us an order, they give us a booking, and they just choose the Swaks. And we are glad to all our clients that they make a reach to this level. Now we are giving, we are starting the franchise opportunity for the investors. Yes, sir. Next slide, please. So I will explain you the financial and other details. Yes. Please, move the next slide. Next slide. Next. So you can see I have already told and introduced about myself. I have worked in Republic Democratic of Congo. Next slide. As I said, more than 2,000 latest styles, and our team of fashion experts collaborate with manufacturers and weavers to bring our customers the hottest trend influenced by the fashion runway. So usually the designs nowadays, you know, Instagram and Google, if you Google it, you will get so many designs at the same time through variant of designers and not a brand, but especially such new designs are coming in Instagram based on Mumbai. So we have those kind of collection as well, boutique collection. From basic till premium range, we are keeping all the varieties at our stores. Next slide, please. So as I said earlier also that we have our 80 units of weavers who are giving us job work on the base. We decide base in the sense either in a cotton or silk or etc fabric base, and the design we will decide that which design we will make it. So we make first of a sample and then we go with the 200 meter or 500 meter order of the fabric. Once the sample get launched and it gets success, that we will work out the price also, that how much affordable it will be for the customers. It should not be go up to so high level. So all these we keep taking care of all these things and going forward with the products. Next, please. So this is our new outlet. Recently we have started in Hyderabad in a very upcoming area. It's called Kompally Suchitra. This is a 1200 square feet area, and at the left side you can see the kurta pajama section from starting till end. So you can imagine that how many designs we are keeping. On the right side, it's a sherwani. I think so. It is a 52 feet deep. So think from starting till end, we are just keeping in the middle. We have kept some standees in. We are hanging the koti, Nehru jacket and blazers and all. So we have from cotton kurta pajama till blazers, tuxedos, and the same products you will get in kids also. So both the segment we are keeping men's and kids, which will be very good to bring a revenue in our store. And the average billing of our store is minimum 7,000 per billing. So you can think that the revenue will be very high and the profitability is also very good. We'll go to the profitability side as a slide as well. Please next. So this is the market segment of all the products
footwear, pharmacy, home and living. Here is apparels on red. Anyways, so this one is men's, women's, and kids. Luxury, premium to mass. Yes. So there are, as I said, then Manish Malhotra and Mumbai's new designers and all. Manyavar is having so many stores in Hyderabad, but some of the stores they are closing it for whatever the issue it will be. We don't know. We have a high quality products, unique design and reasonable price. That is our USP. And the supply, that is the main thing. Supplies and designs we give according to the today's choice and collection, we provide it. Next slide. Our competitive advantage: streamline integrated operations from manufacturing to retail. So that's the main thing. Other hands, I visit Mumbai time to time. I visit the fairs also, CMEI fairs and all. And many other brands, they are keeping their stalls. Currently some brands, they are giving the franchise, but would like to tell you that I'm not aware about either they are having their own job work or not. But in our part, from weaver till the product will reach to the stores, everything it's our own. So costs are very effective, and that's the reason that we gain a huge success in last 4 years. Especially marriage, where this segment was very affected, because where in COVID people were getting married and they were inviting 1,500, 2,000 people. At the same time, it became a range of 25 people. They were not allowing more. But then also we didn't stop. So that is the main part, that that is a very positive for Swax, that we gain very good success in these last 4 years. In the terms of COVID, were also there, but then also. Next, please. Shoes. So even the accessories are also on the job work basis, and very good price, competitive price. I personally, I'm very price conscious person. For the customers, that customer should get each and everything from even though from sherwani till shoes, they should get at a very reasonable price. Even though dupatta, mala, jutis, mojri, everything are our own source, our own design, and very cost effective. Next, please. Next. So here is the yes. So we aim to provide the hand-picked design from various parts of India at the best price around the globe, exceeding customers' expectations and timeline. The brand is moving ahead to promote and expand its business through the FOFO franchise model. So our model is only FOFO. We have not worked with the FOCO. And I have already talked with Anurupa to make FOCO also, because we have participated in High-Tech Expo in Hyderabad, arranged by Franchise India. And that time there were some inquiry of FOCO also. So that time discussed, maybe Anurupa will give me as soon as earliest. Yes, I'll do that, sir. So currently in the FOFO, we have 800 to 1200 square feet area. You can see both the row here. Initial investment starting for 817 lakhs and for 1226 lakhs. Franchise fees are 3 lakhs for both the 800 and 1200 square feet area. Initial stock 30 lakhs for 800 and 40 lakhs for 1200. Gross margin is 30%. In both are same. Average ROI, it's more than 90%, which it is very good. Nobody will give, since I said that everything it's our own. So the profitability will be also very high, and ROI will be also very high. Payback period is 21 months for 800 square feet and 1200 square feet, 22 months. Agreement period is for 5 years. Next. So next. Currently, we are planning for the Telangana state only. We are not planning for any other state. It will be very good for us because personally, I want to
I'm thinking that if it is in our state and South is very fast, especially Hyderabad in ethnic where the demand is more. And if it is in Telangana, I personally want to focus on those stores and get success in our brand, because other states still we have not planned, and we are not thinking about currently, since for 1 year at least we want to focus in Telangana only. Next. So great reason to partner with Swaksh. It's unmatched quality and unique design, lucrative franchise model, attractive return on investment, and comprehensive brand support. So brand support, as I said, that we give all the brands support like CRM, and we'll set up the store, we'll give the contact also of source of furniture and how it has to make and everything. Opportunity, India is a land of multiple festive. Yeah, this is the main part. It's not about the marriages. Nowadays, ethnic become very regular. Earlier, it was like that, in a year, we were not having a business. 4 months, we have to see it. And 8 months only the business was, but now it's nothing like that. Sometimes, even though if there is no Murat or some good days are not coming, because it's since it's in South, they are very sensitive regarding this Murat and all, so they won't buy. But in the same case, some as I said, that some US client they will visit and they have to go, so they'll come for the shopping, and the work will go ahead. Some birthdays will come, so that also they will celebrate. So like this, this is not a cut part of business, seasonal business. This is now a regular business. Ethnic is more in demand in these days. Next, please. So we will support our investor site selection and approval, showroom design and development, furniture, fixture, equipment sourcing, product and staff training, inventory planning and management, local marketing and execution guidance, ongoing marketing guidance and advisory, advertising and promotion schemes, consistent product supplies, reasonable price and profit margin, store audits and advisory, stock rotation and correction. Next, please. So thank you so much, all the investors. And if anybody is interested, please feel free to contact us on the given number, or else you can type in a QA box if any queries, please. Thank you, sir. So, sir, I would like to ask 2 questions, as I want to know a little more about the financial model. How much will be the investment? What kind of area we are looking for the investment? Area we are looking for minimum 800 to 1200 square feet, even though 2000 square feet also we are planning. Maybe the street will be ready, and we are planning for 2000 square feet area also. And the it's mentioned as 30 to 40 lakhs initial amount, initially starting amount. So, sir, what is our franchise fees? Franchise fees is 3 lakhs only. Okay. Are we taking any kind of royalty? No royalty. No royalty. No royalty. So, sir, I would like to know what kind of dead stock recycling will be there, or any kind of thing will be there. See, in the dead stock, stock will be taken back every after 6 months. Why every 6 months? Because season will change. 2 marriage season comes, or 3 marriage season comes. Sometimes 3 marriage season comes. So it's better to get every after 6 months stock will be taken back from the company, and new stock will be provided against that. Okay. There is no dead stock issue with the investors. Okay. So, sir, presently you have shown one store in Kompally, you mentioned, right? Yeah, currently we have 3 outlets in Hyderabad. Franchise store, sir? Yeah. No, this is all 3 are company owned only. So we are already open for franchising, as I can see. So what kind of franchise area you are looking for? High street, malls, or normal crowded street area, shopping areas you are looking for? Or you are okay with any particular area where the footfall is high?
See, ethnic wear, it's mainly since the investment is greater, right? It's a little bit higher because ethnic products will be expensive anyhow. So area we have to find it's a high street, and we have to personally visit it, and then only we can decide, because we don't want the investor to lose. If anything from our side also, we will also contact you and tell you. And if investor has some sites, we have to visit, as we discussed earlier also, that we will personally take care of it, because that is the main part. The footfalls has to be there. So are we helping with the area also, area segregation and all, in case any client is interested in? Yes. Particular area? Okay. Yes, just now, yesterday, as I discussed with you, in the Dilsukh Nagar, we have one 1900 square feet area. So I will go and visit it, and we'll decide it how it is. Hopefully, I think so. It is 3 shutters, and it was earlier there was a bakery and something like that. The person has informed me. So let me check the area once how it will be. So few more question I have. Are we looking to expand out of Telangana presently, or in future it is possible for us? In future also it's possible for us, and it's not that we cannot do outside also. It's depend on the investor interest also, because when you do any business, you have to think that you are adopting a baby. So those kind of interest, if it is there, then definitely anywhere in India I am interested, because it's my baby, so I want to give somebody else, and I want them to be serious. And it's not that only I want to grow, or sometimes like investor wants to grow. It's not about the grow particularly one person, but I want us to go together. That's what reason is. Thank you, sir. I hope me and the investors, our friends who have joined the webinar, is like clear about the brand. Anybody is having any questions, please drop your question in the text box so that we can answer your question. Right. Thank you so much, Anurupa. Thank you, Mr. Thank you so Right. much for everything. Thank you, Harshika. Right. Thank you so much for this wonderful presentation and discussion, Anurupa, for the brand swags. So now we have the third brand on board with us, that is Pokket Cafe. Pokket Cafe is into a cafe business since 2013. Pokket Cafe is a hangout place that offers food, fun, and classic ambience for the customers. Serving comprehensive menu of 150 plus flavors, and the cafe intend to reach people even with the smallest pocket size by making fast food available at most economic cost. So to more about this opportunity, I would like to invite the founder of Pokket Cafe, Mr. Abhijit. Welcome, Abhijit. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Yeah, so Harshika, can you please? Abhijit ji, I have one video that you have shared with us. Can I play that video before we go with the PPT presentation? Yes, please. क्यों देश विदेश फिरे मारा, क्यों हाल बेहाल थका हारा, क्यों देश विदेश फिरे मारा, तू रात का बंजा। So I'm Abhijit Ghatge. I'm based from Pune, Maharashtra, and since 2013 we are into this business. So basically, I'm from a software industry background. I worked around 7 to 8 years into software industry, and उसके बाद में मैंने कैफे इंडस्ट्री में मतलब फूड इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था. So we have first outlet we started in 2013, but हमारा जो second outlet जो हमने जो franchisee का plan किया था तो that we started in 2017. So from 2017 we have opened more than 100 outlets. Okay, as you know, the India's cafe market is very huge, around 37,000 crore market in 2020, and every year it's growing by 11%.
okay, as per CAGR report. So we have many cafes, okay. So Pocket Cafe is basically, as you know, the in India, मतलब आपको आपने देखा होगा Pocket ये Starbucks है, उसके बाद में CCD है या फिर बरिस्ता है, और सो दे हैव एवरी ब्रांड जो भी आज के डेट में मार्केट में इंडिया में है, सो एवरी Starbucks has a different client base, okay. So their ticket size is very huge, okay, their client or target customer is very different. So likewise CCD has a different clientele, so barista has a different clientele. So Pocket Cafe is a pocket friendly coffee shop experience, okay. So our prices are starting from hardly 50 to 60 rupees to hardly max to max around 200 rupees, okay. So that's where we are targeting. So our main clientele or target customer is lower middle class or middle class customers, okay. हमारे जो cafes आज की डेट में है वो है छोटे छोटे सिटीज में, tier 2 tier 3 सिटीज में है. सो हमारे 20,000 25,000 पॉपुलेशन जैसी सिटीज है, जैसे तालुका प्लेसेस है, वहाँ पे भी हमारे कैफेज फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years 6 years से काम कर रहे हैं. और आज की डेट में उनका, आप अगर उनका एट द एंड ऑफ मंथ प्रॉफिट देखेंगे तो दे आर अर्निंग अराउंड 2 लाख रुपीज पर मंथ. सो ईयर का अराउंड उनका 20 to 24 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट होता है, जो छोटे छोटे सिटीज में भी बिजनेस करके उनका बिजनेस हो रहा है. सो हमारा एज अ ब्रांड जो प्रोजेक्शन या फिर जो हम प्लान कर रहे हैं वो छोटे छोटे सिटीज में जा रहे हैं हम एज अ ब्रांड एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि देखो हमारे आज की डेट में हमारा महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, गुजरात में है, उसके बाद हमारा चंडीगढ़ में आउटलेट है, उसके बाद हमारा बिहार में भी आउटलेट है. बट एज अ ब्रांड जो हमारा ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जो साइज में हम टिकट साइज में जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, तो उसका जो पोटेंशियल आज की डेट में ज्यादातर बन रहा है वो छोटे छोटे सिटीज में बन रहा है. जो तालुका डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस है वहां पे मेनली हम टारगेट कर रहे हैं हमारे ब्रांड को. हमारा मेन पर्पस हमारा क्या होता है कि हम जो छोटे छोटे सिटीज को टारगेट कर रहे हैं उसके पीछे का एक ही रीजन है कि छोटी सिटीज में वहां पे मंथली ओवर रेट्स बहुत कम रहते हैं, क्योंकि हमारे जो भी तालुका प्लेसेस पे कैफे है वहां पे हार्डली हमारा 25,000 का मंथली रेंटल रहता है. सैलरी एम्प्लॉय सैलरी हार्डली 50 to 60,000 रुपीज का सैलरी रहता है, 15,000 के इलेक्ट्रिसिटी बिल रहते हैं, और वहां पे हमारे कैफेज अराउंड 5 to 6 लाख रुपीज का नेट बिजनेस करते हैं एवरी मंथ, ओके. वहां पे ऑनलाइन स्विगी जोमेटो आज के डेट में नहीं है, बट फिर भी 5 to 6 लाख रुपीज के बिजनेस पे आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस उनका प्रॉफिट अराउंड 2 लाख रुपीज का बन जाता है. सो दैट्स द रीजन एज अ ब्रांड वी आर मोर फोकस्ड, एंड हम जो प्लान कर रहे हैं एक्सपेंशन का वो छोटे छोटे सिटीज के ऊपर हमारा एज अ ब्रांड हमारा फोकस है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आज की डेट में देखो पॉकेट कैफे में वी आर जस्ट नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट एज ऑफ नाउ, ओके. क्योंकि इनिशियल हमारा स्टार्ट हुआ था कि हम खाली कोल्ड कॉफी सेल करते थे, मतलब 2013 से लेके 2017 तक हम खाली कोल्ड कॉफी और शेक्स के ऊपर हमारा ब्रांड ग्रो हो रहा था. हमारा कोल्ड कॉफी और शेक्स बहुत फेमस है, बहुत सेल होता है उसका, बट एट द सेम टाइम वी रियलाइज कि अगर हमें एज अ ब्रांड ग्रो होना है तो हमें कंप्लीट कॉफी शॉप एक्सपीरियंस देना पड़ेगा. हमें यूरोपियन कल्चर जो है एक कॉफी शॉप का, वहाँ वो हमें हमारे अगर बिजनेस में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, रिप्लीट करेंगे, देन ओनली एज अ ब्रांड वी कैन ग्रो. बिकॉज कस्टमर ऑलवेज एक्सपेक्ट कि उसको बेवरेजेस के साथ में एक अच्छा फूड वहाँ पे मिलना चाहिए और उसको एक वो ऑथेंटिक टेस्ट होना चाहिए. तो दैट्स व्हाई 2017 में हमने हमारे जो खाली शेक या फिर कोल्ड कॉफी सेल करने वाले कैफे थे उसको हमने कन्वर्ट किया था कि उसको फूड वाले मेनू पे कन्वर्ट किया था. सो 2017 में जैसे हमने फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन स्टार्ट किया उस टाइम से हमने बहुत सारे रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट है उसको हमने उसमें R&D स्टार्ट किया हुआ था. सो हमारे कैफेज में हम फ्रेश डो पिज्जा सर्व करते हैं, बर्गर, पास्ता, सूप सर्व करते हैं. उसके अलावा कैपेचिनो है, टी के अलग अलग टाइप से, डिप टी है, फ्लेवर टी है, इस तरीके का पूरा मेनू है. शेक्स है, उसके अलावा पुणे में बहुत सारे फेमस मस्तानी है या फिर कुछ डेजर्ट्स है चॉकलेट वाले. सो ये सब चीजें हमने हमारे मेनू में ऐड की हुई है. आज के डेट में हमारे मेनू में हम अराउंड 127 प्रोडक्ट का मेनू सर्व करते हैं. बट आज की डेट में एज अ पॉकेट कैफे का जो आइडेंटिटी है वो खाली फूड का नहीं है. कस्टमर आता है फर्स्ट टाइम अगर हमारे कैफे में तो वो फूड के लिए आता है, बट ओवरऑल वो लेके क्या जाता है, तो एक्सपीरियंस लेके जाता है. हम सेल करते हैं एक्सपीरियंस आज की डेट में. सो हमारे ब्रांड का अगर आइडेंटिटी जो बना है ना वो एक्सपीरियंस का बना है. वहां पे हम एक पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में एक बेस्ट एक्सपीरियंस
बेस्ट सर्विस के साथ, बेस्ट फूड के साथ, बेस्ट गार्निशिंग के साथ हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये ओवरऑल मेरा बैकग्राउंड है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि मैं एक छोटे स्मॉल टाउन से आता हूँ और मैं पुणे में हमने फर्स्ट आउटलेट हमारा स्टार्ट किया हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Mr. Gajanan Safalgar, he is my partner in Pocket Cafe since 2017. He is associated with the Pocket Cafe, and he has more than 20 years of experience in marketing. So, for growing the brand and for growing the sales and all, so he helps us. So, next slide, please. As a vision, our vision is very simple: to be India's favorite coffee shop company. Our mission is to enhance the lives of the customer by creating best customer experience. As I told, we are not just selling the product or the food; we are selling the experience. And to achieve the vision of the company, we are continuously working on the customer experience and all. So that will help us to achieve our vision. Okay, next slide, please. As I told, the our presence in India. Okay, next slide, please. Yeah. So currently हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसमें 65% का ग्रॉस मार्जिन है, फ्रेंचाइजी को मिलता है, 35% का हमारा फूड कॉस्ट है, 100+ आउटलेट है जैसे हमने बताया, 100+ मेनू है हमारे इसमें, जिसमें हम बेस्ट क्वालिटी फूड सर्व करते हैं, और उसमें मेजॉरिटी जो हमारा फूड है वो हमारे सेंट्रलाइज किचन में बनता है। हमारे प्रोडक्शन हाउसेस है, 2 यूनिट है हमारे प्रोडक्शन के रॉ मटेरियल के पुणे में, वहाँ पे उसका पूरा प्रोडक्शन किया जाता है। हमारे पास 3 व्हीकल है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए, सप्लाई के लिए। उसके अलावा बाय बस एंड बाय ट्रेन हमारा टाई अप है, जिसके थ्रू हम ऑल ओवर इंडिया हमारे सप्लाई करते रहते हैं पूरा रॉ मटेरियल। ROI हमारे जो यूनिट का है, बिजनेस का है, वो वैसे तो 24 मंथ्स बताते हैं हम, बट अगर आप में से कोई अगर कोई तालुका प्लेस या फिर तालुका से या फिर डिस्ट्रिक्ट सिटी से आते हैं, तो वहाँ पे हमारा ROI मैक्स टू मैक्स 18 महीने का रहता है। अगर वही आप तालुका प्लेस पे हमारा बिजनेस मॉडल स्टार्ट करेंगे तो उसका ROI हमारा 12 से 15 महीने के अंदर निकल जाता है। उसका एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आप सिंपली एक 5 लाख रुपीज़ का अगर बिजनेस भी कंसिडर करेंगे, तो 5 लाख रुपीज़ के बिजनेस पे अराउंड 35 नहीं बट 40% का आप फूड कॉस्ट कंसिडर कर लो। ओके, तो 40% का फूड कॉस्ट माइनस करने के बाद आपको 3 लाख रुपीज़ का क्रॉस मार्जिन मिल जाता है। उसके ऊपर आपका 25,000 का इलेक्ट्रिसिटी रेंटल आता है, प्रॉपर्टी रेंटल आता है, अराउंड 60,000 का एम्प्लॉय सैलरी आता है, एंड 15,000 रुपीज़ का आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है। तब भी आपका अराउंड 2 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट बन जाता है आफ्टर आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से बहुत सिंपल मॉडल है, आप छोटे छोटे तालुका या फिर डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे रन करने जैसा ये बिजनेस मॉडल है। पिछले अराउंड 10 साल से, मतलब ये अगस्त में हम 10 साल कंप्लीट करेंगे इस बिजनेस में, फूड बिजनेस में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज तक हमने मोर देन 3 लाख पिज्जा सेल किए हुए हैं। हमने हमारे कैफेज पे हम ऑथेंटिक पिज्जा सेल करते हैं, जो फ्रेश डो वहीं पे बनता है, वहीं पे सर्व किया जाता है, और उसका एक जो बोलते हैं ना कि एक कोई भी आप एक इंटरनेशनल चेन पिज्जा हाउस में जाते हैं तो वहाँ पे अंदर एंट्री करने के बाद एक पिज्जा का एक अरोमा आता है, आपको समझ गए ना? तो वो तभी आता है जब वो आप ऑथेंटिकली उसको बनाते हैं, आपका प्रिपरेशन और रेसिपी उस तरीके का हो। तो ये भी सेम चीजें हमारे भी ब्रांड में होती है। अराउंड मोर देन 3 लाख पिज्जा हमने सेल किए हुए अब तक। उसके अलावा 20 लाख प्लस बर्गर्स आज तक हमने सेल किए हुए हैं। 1 लाख प्लस इवेंट्स हमारे कैफेज में हुए हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस को अगर हमें ग्रो करना है ना, तो मैक्सिमम इवेंट्स स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो उसमें बर्थडे सेलिब्रेशन होते हैं, एनिवर्सरी होती है, किटी पार्टी होती है, कंपनी के इवेंट्स होते हैं, उनके मीटिंग्स होते रहते हैं। सो बहुत सारे इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे कैफे में, फैशन शोज हम ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे कैफे में। उसके अलावा हम कुछ बुक रीडिंग करने वाली कम्युनिटी है, उनका
उनके इवेंट्स में उनको हम कम्युनिटी का इकट्ठा करते हैं। उसके अलावा जो राइटर्स है, पोएट्स है, उनको हम इकट्ठा करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा इवेंट्स होंगे उतने ज़्यादा बिजनेस का ग्रोथ पॉसिबल होता है, उतना हमारा अवेयरनेस ब्रांड के बारे में मार्केट में चला जाता है। तो बहुत सारे इवेंट्स पे हम फोकस करते हैं। हर एक फ्रेंचाइजी हमारी उसके ऊपर फोकस करती है और बहुत बहुत दूर से लोग हमारे कैफेज को विजिट करते हैं, नॉट ओनली फॉर द फूड बट दे फील सम डिफरेंट एक्सपीरियंस इन आवर कैफे। दैट्स द रीजन। मैंने बताया था कि हमारा कोल्ड कॉफी बहुत फेमस है। आज तक हमने मोर देन 36 लाख कोल्ड कॉफी अब तक सेल की हुई है हमारे ब्रांड के अंदर। हमारा कोल्ड कॉफी एक अलग है, यूनिक प्रोडक्ट है। मतलब आई कैन से कि हमारा कॉफी लोग कंपेयर करते हैं, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स है उसके साथ कंपेयर करते हैं। लोग बोलते हैं उनसे भी आपका बेटर है। हमारे यहाँ पे जो हम पिज्जा सर्व करते हैं, लोग बोलते हैं कि बाहर के जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है उनके यहाँ पे हम पिज्जा खाते हैं तो हमें बॉडी में ये तकलीफ होती है, बट आपके यहाँ का पिज्जा बहुत ही अच्छा है। मतलब ये ओवरऑल कस्टमर के रिव्यूज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे मोस्ट ऑफ द कैफेज के रिव्यू अराउंड 4.5 से प्लस है। ओके, सो इस तरीके से हम बहुत ही अच्छे वे से ब्रांड को रन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो हम सपोर्ट के बारे में अभी यहाँ पे 360 डिग्री सपोर्ट के बारे में मैं बात करूंगा। जब प्री ओपनिंग के टाइम पे लोकेशन एनालिसिस या फिर जो भी सर्वे के रिलेटेड है वो चीज़ें हम करते हैं। आर्किटेक्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये सब चीज़ें सब नॉर्मल लोग करते ही है। स्टाफ रिक्रूटमेंट में अगर आपका मेट्रो सिटीज़ में है तो डेफिनेटली हम हेल्प कर सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, बट छोटी सिटीज़ में है तो भी आप लोकली वहाँ से रिक्रूट कर सकते हैं लोगों को, और उनको ट्रेनिंग हम हमारे यहाँ पे एंड पे प्रोवाइड करते हैं, जो नॉर्मली 20 डेज का ट्रेनिंग रहता है। उसका इन डिटेल शेड्यूल रहता है। खाली ट्रेनिंग देने के लिए नहीं देते, बट हर दिन का वहाँ पे शेड्यूल रहता है, कौन सी चीज़ें क्या करना है, और उसके अगेंस्ट हम साइन ऑफ भी लेते हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल सप्लाई नॉर्मल है, जो यूजुअल है कि वो लेना ही पड़ता है। टाइप्स नॉर्मली कुछ लोकल अगर वेंडर्स से करना है तो वो भी हम करा के देते हैं। कुछ स्ट्रेटेजिकली कुछ ब्रांड्स हमारे साथ सप्लायर्स टाइप्स रहते हैं, उनका वहाँ पे नॉर्मली प्रेजेंस रहता है, उसके साथ भी रहता है। उसके बाद ट्रेनिंग के बारे में मैंने बताया। सॉफ्टवेयर हम नॉर्मली अभी हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेड सॉफ्टवेयर है वो पेट पूजा है। पेट पूजा बहुत ही यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है जो बिलिंग के लिए, पॉज के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा सीआरएम हमारे यहाँ पे व्यापार वाला इम्प्लीमेंटेड है। अगर किसी फ्रेंचाइजी ने लिया है किसी ने और उनको कुछ रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करना है तो बहुत सिंपल वे से वहाँ पे वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और वो हमारे यहाँ पे आ जाता है। तो हमने डिजिटली जितना पॉसिबल है वो सब चीज़ें हमारे ब्रांड में की हुई है। उसके बाद में स्विगी जोमेटो के साथ टाइप है तो ब्रांड की तरफ से आपको वो टाइप करके दिया जाएगा। बट क्या होता है, एक बार ये हो गया कैफे ओपन होने से पहले वाला सपोर्ट, बट मेन जो पार्ट आता है ना वो कैफे ओपन होने बाद वाला सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम चीज़ें क्या करते हैं, तो हमारे यहाँ पे हमारा वीकली मीटिंग होता है फ्रेंचाइजी ओनर के साथ या फिर कैफे मैनेजर। अगर फ्रेंचाइजी ओनर इज नॉट अवेलेबल तो हम कैफे मैनेजर भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो एवरी सैटरडे मॉर्निंग को हमारा वो वीकली मीटिंग रहता है। उसके बाद में हमारा डेली स्टैंडिंग मीटिंग रहता है कैफे मैनेजर के साथ, जो हमारा हार्डली 10 मिनट का मीटिंग रहता है, जिसमें हम कैफे मैनेजर्स को कुछ टारगेट्स देते हैं। आज का सेल इतना होना चाहिए, आज आपको ये प्रोडक्ट ज़्यादा अपसेलिंग करना है, आज आपको इतने रिव्यूज लेने हैं, आज आपको कुछ कस्टमर को एक वाव एक्सपीरियंस क्रिएट करना है, आज आपको बर्थडे सेलिब्रेशन रिलेटेड कुछ आपको कस्टमर्स को अवेयरनेस क्रिएट करना है। सो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम डेली स्टैंडिंग मीटिंग लेते हैं। अराउंड 5 to 10 मिनट्स का हमारा रहता है। आज तक हमने बहुत सारे, मतलब हमारे आज तक करीब 20 प्लस हमने रेडियो एडवर्टाइजमेंट किए हुए हैं। न्यूज़पेपर में भी हमने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट किए हुए हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड ऑल। सो वो भी करीब आज तक न्यूज़पेपर में भी, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आज तक हमने 4-5 बार किया हुआ है, फिर लोकल न्यूज़पेपर में बहुत बार हुए हैं। उसके बाद हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करके देते हैं आपके लिए, बिजनेस के लिए ग्रो करने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपके लोकल एरिया के लिए। उसके अलावा इंस्टाग्राम प्रमोशंस हम करते हैं, फेसबुक प्रमोशंस करते हैं। उसके बाद में हमारे कुछ टाइप्स है इंटरनेशनल कंपनियों के साथ जो आपके कैफेज पे आके आपके लोकेशंस पे वो ऑडिट करते हैं हाइजीन रिलेटेड। फिर वहाँ पे बिफोर, मतलब जब कैफे आपका ओपन हो रहा है तो वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से उसको हाइजेनिकली वेल मेंटेन आपको कैफे रन करना है, कौन सी चीज़ के लिए, क्लीनिंग के लिए आपको कौन से केमिकल्स यूज करने हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देते हैं। ओके, उसके अलावा गूगल पेज हम बनाते हैं, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे से उसको फिल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
सो दिस इज ऑल अबाउट कि आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं हमारे साथ आके पॉकेट कैफे के साथ। देखो, बिजनेस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए सब लोग करते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांड को सर्वाइव होना होता है। अगर बिजनेस को हमें सर्वाइव करना है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि देखो, एज अ ब्रांड में हमने बताया कि पॉकेट कैफे हमारा ब्रांड का नेम है, बट अगर हमें उसको सक्सेसफुल करना है तो हमें बहुत छोटे छोटे चीज़ें होती है, जैसे लोकेशन सिलेक्शन रहेगा, उसका रेंटल रहेगा, उसका सिटिंग कितना है, आजू बाजू का लोकेलिटी कितना है, उसका फ्रंट कितना है, हम कैसे वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, कहाँ कितना रेंट तक हम मैक्सिमम खींच सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, रिस्क एंड ऑल, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। उसके लिए डेफिनेटली हम टाइम लेते हैं। हमारे साथ अभी बहुत सारे, मतलब आज की डेट में करीब 10 LOI हो चुके हैं पॉकेट कैफे के साथ कि हमें पॉकेट कैफे लेना है, बट जब तक हमें राइट लोकेशन नहीं मिलता है ना, तब तक हम उसको फाइनलाइज नहीं करते। कुछ लोग हैं पिछले 8 महीने से हमारे साथ लोकेशन ढूंढ रहे हैं, कुछ लोगों को 1-1.5 साल से ढूंढ रहे थे, उनको प्रॉपर्टी मिल गया। तो मतलब हम बहुत सारा टाइम देते हैं कि हमें राइट लोकेशन मिलने के लिए। ओके, क्योंकि अगर हमें राइट लोकेशन जब तक नहीं मिलती है ना, तब तक हम गो अहेड नहीं देते। क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो कोई इन्वेस्टर हमारे साथ में आ रहे हैं, उनका पैसा राइट जगह पे लगना चाहिए, उनका वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस चलना चाहिए। और जितना जल्दी उनका प्रॉफिट मेकिंग, मतलब हमारा टारगेट तो रहता है कि उनका पहले महीने से प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। इसके लिए मैं, आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन से स्टार्टिंग से मैं तालुका प्लेसेस, छोटी सिटीज और उसको प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं एक साथ आपके साथ जुड़ जाऊंगा और वैसी लोकेशन पे हम स्टार्ट करेंगे ना बिजनेस, तो आपको वो लाइफ लॉन्ग रिटर्न देगा। हमारे कैफेज के एग्रीमेंट 3-5 साल के हम नहीं करते हैं, फ्रेंचाइजी के भी नहीं रहते हैं, और जो प्रॉपर्टी हम लेते हैं उसके भी एग्रीमेंट हमारे 10 to 15 years के रहते हैं। क्योंकि वी नो कि हमारे बिजनेस रन होते हैं, उतना प्रॉफिट भी कमाते हैं। दैट्स द रीजन हम क्लियर है कि हमें कौन सी सिटीज में जाना है और वहां पे जाना है तो कितने साल का हमें एग्रीमेंट करना है। अगर कोई हमें 5 साल का भी एग्रीमेंट करने के लिए रेडी होता है ना, तो भी हम एग्री नहीं होते, हम बोलते हैं हमें एटलीस्ट 10 साल का एग्रीमेंट चाहिए। और अभी हमारे जो भी नए कैफेज ओपन हो रहे हैं, उनके एग्रीमेंट्स अराउंड 10 से 15 साल के बीच में है। ओके, तो इस तरीके से हमारा स्ट्रेटेजी है। हमारे कैफेज का जो स्क्वायर फीट एरिया है वो मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट एरिया हम पॉकेट कैफे के लिए ढूंढते हैं। ओके, 1000 स्क्वायर फीट शॉप ही हमें लगती है, ग्राउंड फ्लोर पे ही प्रॉपर्टी लगती है। उसके बहुत सारे नाम्स है, अराउंड हमारे कुछ 70-80 कुछ अलग अलग चेक पॉइंट्स है, जिसको चेक करने के बाद उसमें से कैसे पास ऑन होती है वो प्रॉपर्टी, उसके बाद हम उसको फाइनल करते हैं। हमारे कैफेज का इन्वेस्टमेंट 1000 स्क्वायर फीट का अराउंड 25 लाख रुपीज का है, जिसमें से 7 लाख रुपीज हम ब्रांड फी चार्ज करते हैं, फ्रेंचाइजी फी चार्ज करते हैं। हमारा रॉयल्टी कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा इसमें जो जाने वाला रॉ मटेरियल है वो इन हाउस है, उसकी वजह से उसमें हमें 5 to 7% का मार्जिन मिल जाता है। उसमें हमारा ब्रांड चलता है। क्योंकि अगर हम रॉयल्टी लगा देंगे ना, तो सामने वाला हमारा जो प्राइस रेंज है उसमें सर्वाइव नहीं होगा, फिर वो पॉकेट कैफे नहीं कहलाएगा। क्योंकि अगर हम रॉयल्टी लेंगे तो फिर हमारे प्राइजेस थोड़ा हायर साइड पे रखने पड़ेंगे। सो इस तरीके से हमने बहुत सिंपल हमारे बिजनेस मॉडल को रखा है। अगर आप तालुका प्लेसेस पे स्टार्ट करेंगे तो आपको 12 से 15 महीने में ROI आ जाएगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे जाएंगे तो 18 से 24 महीना आएगा। बट आप अगर वही मेट्रो सिटीज में जाएंगे बड़े, तो वहां पे डेफिनेटली आपको ये 24 मंथ्स में नहीं आएगा, ये आपको एटलीस्ट 30 मंथ्स आपको टाइम लगेगा आपका ROI आने के लिए। क्योंकि इनिशियली कुछ महीना आपको ब्रेक इवन निकालने के लिए लगता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे 2 मॉडल है, फोको है एंड सेकंड इज फोफो। सो फोको के बारे में बताऊंगा। फोको हम वहीं पे करते हैं जहां पे हमें कम रेंटल में अच्छी जगह मिलती है, वहीं पे हम करते हैं। आज की डेट में हमारे 2 फोको है, और 2 फोको हमारे नए ब्रांड के, मतलब फोको और 2 ओपन हो रहे हैं। सो फोको में हमारा बिजनेस मॉडल ये है कि 1500 स्क्वायर फीट का मिनिमम स्पेस चाहिए, इन्वेस्टमेंट अराउंड 40 लाख रुपीज का उसमें लग जाता है। हमारा एग्रीमेंट मिनिमम 9 साल का रहता है फोको में। ओके, ROI हम 36 मंथ्स का बोलते हैं फोको में। प्रॉफिट मार्जिन अगेन 60 to 70% का ग्रॉस मार्जिन मिल जाता है वहां पे। शेयरिंग हमारा सिंपल है, हम MG नहीं देते हैं। हमारा, हम तभी स्टार्ट करते हैं जहां पे हमें लगेगा कि वहां पे प्रॉफिट मेकिंग है। अगर वहां पे रेंटल कम है तो डेफिनेटली पहले महीने से ही प्रॉफिट मेकिंग स्टार्ट हो जाता है। भले वो 1 लाख प्रॉफिट कमाएगा, बट वो कमाना स्टार्ट हो जाता है पहले महीने से। ओके, फिर हमारा शेयरिंग ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर करेगा, रन ब्रांड करेगा, मैनेज ब्रांड करेगा, एम्प्लॉय का पूरा मैनेजमेंट ब्रांड देखेगा। उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 50-50% रहता है।
अगर इनिशियल कुछ मंथ के लिए कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए कुछ 1-2 लाख रुपए का अगर कुछ इन्वेस्टमेंट में डालना पड़ रहा है तो वो भी 50-50 रहता है, ब्रांड का 50 रहता है, इन्वेस्टर का 50% रहता है। बहुत सिंपल मॉडल हमने इसको बनाया हुआ है और इसको ट्रैकिंग करने के लिए हमारे पास जो हम पॉज रन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो उससे पूरा ट्रैकिंग और पूरा वो हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ 3D इंटीरियर्स है कैफेज के। हमारा ये फोफो वाला मॉडल है। फोफो के लिए 1000 स्क्वायर फीट 25 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट, एग्रीमेंट 5+5 का है, खाली 5 साल का नहीं, 5 साल बाद हम खाली रिन्यू करते हैं, उसके अगेंस्ट हम कुछ फ्रेंचाइजी फी फिर से चार्ज नहीं करते। ROI मैंने बताया, अगर तालुका प्लेस है तो अराउंड 15 से 18 महीना या 12 से 15 महीने में आता है। अगर डिस्ट्रिक्ट प्लेस है तो 24 मंथ्स का आप पकड़ लो। मार्जिन सेम ही रहते हैं। ट्रेनिंग एंड ऑल वो हमारी एंड से किया जाता है, जो भी आपका प्रॉफिट है आप ही को मिलेगा, रॉयल्टी उसमें कुछ भी नहीं है। ऑडिट होते रहते हैं हमारी तरफ से, स्टैंडिंग मीटिंग होते हैं, रिपोर्टिंग टूल्स हैं हमारे बहुत सारे, उसके अलावा वीकली मीटिंग हमारे रहते हैं जो इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट। क्योंकि देखो हमारे वीकली मीटिंग में हम डिस्कशन वही करते हैं कि आगे का फूड का कैफे इंडस्ट्री का मार्केट कहाँ पे है, हम कहाँ पे खड़े हैं, हमें कहाँ पे जाना है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी स्ट्रेटेजीज क्या चल रही है, हमारे विजन्स के अकॉर्डिंगली हमारे नए रूल्स क्या आ रहे हैं, नए इम्प्लीमेंटेशन क्या होने वाले हैं, ये छोटे छोटे चीजों के ऊपर हमारा डिस्कशन होता है। बहुत प्रोडक्टिव मीटिंग होता है, सब लोग उसको बहुत सीरियसली लेके ज्वाइन करते हैं और डेफिनेटली वहां पे जो भी चीजें हम डिस्कस करते हैं हमारे फ्रेंचाइजी नीचे जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। दैट्स द रीजन आज के डेट में एक कस्टमर एक्सपीरियंस कैफे पॉकेट कैफे बन रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में अराउंड हमारा 50 लोगों का सिटिंग होता है हमारे कैफे में। हमारे हर एक कैफे में आज की डेट में वॉशरूम होते हैं, नीट एंड क्लीन वॉशरूम होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम हमारे ब्रांड को रन करते हैं। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अभिजीत। थैंक यू वेरी मच। अभिजीत जी, मुझे 2 चीजों के लिए क्वेरी है। जैसे कि आपने Yes. बोला टियर 1 टियर 2 सिटीज में भी आप रन कर रहे हैं, राइट? आपका पॉकेट फ्रेंडली है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हम लोग सेल करते हैं। यस। तो सर अभी तक जो हमारे आउटलेट्स इतने सारे हैं उसमें से कितने फ्रेंचाइजी है और कितने कंपनी ऑपरेटेड है? देखो अभी कंपनी ओन हमारे 2 है, ओके। उसके अलावा 2 नए अभी हमारे काम चल रहे हैं कंपनी ओन के, और फोको के दो एग्जिस्टिंग है और 2 नए और आ रहे हैं फोको में। अच्छा। बाकी सब फ्रेंचाइजी है। और हमारा क्या है, हमारे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स है ना, उसमें उसका एम्बियंट टेम्परेचर पे वो रहते हैं जो हम इन हाउस बना रहे हैं। सॉसेस रहेंगे या फिर मैंने जैसे बोला कि हमारा फ्रेश डो पिज़्ज़ा है, तो बहुत इजी टू मतलब लॉजिस्टिक के लिए बहुत इजी है, सामने वाले के लिए भी इजी है। डेफिनेटली हमारा कोल्ड कॉफ़ी है, उसके लिए कोल्ड चेन लगता है डिलीवरी के लिए, उसके लिए भी हमारे पास अलग अलग टाइप्स है और वो भी बेस्ट रेट में वहाँ पे वो डिलीवर करते हैं। क्योंकि हमें अल्टीमेटली ये देखना होता है कि बेस्ट प्राइस में वहाँ पे सेल होना चाहिए हमारा। जो जब हम पॉकेट कैफे नाम हमने रखा है तो वो ब्रैकेट हमें छोड़ना नहीं है, ओके। और सामने वाले का भी प्रॉफिट भी आना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हम बहुत केयरफुली और स्टडी करने के बाद करते हैं। आज तक हमने बहुत ऐसे हायर रेंटल पे प्रॉपर्टी ली हुई नहीं है। हमारे मैक्सिमम आप स्टोर देखेंगे तो 50, 60, 70,000 मैक्स टू मैक्स रेंटल है हमारे कैफेज में जहाँ पे हम रन कर रहे हैं। और आप तालुका प्लेसेस पे देखेंगे तो 10-15 हज़ार रुपए से लेके मैक्स टू मैक्स 25,000 के रेंटल है और बहुत अच्छे प्रॉफिट मेकिंग है। आज के डेट में मैं भी अगर कंपनी ओन हम जो स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं वो भी तालुका प्लेसेस पे कर रहे हैं, क्योंकि मिनिमम रिस्क है। मतलब अगर 5-6 लाख रुपए का भी बिजनेस हो गया ना, 5 लाख के बिजनेस में मैंने आपको 2 लाख रुपए का। सही बात। So I think Anurupa, you have asked all the questions that you are looking and what our investors looking for. Thank you so much, Abhijit ji, for this wonderful presentation and discussion about the brand Pocket Cafe. Friends, for more details about the brands that we have introduced today, Gabru Di Chaap, Slacks and Pocket Cafe, you can reach us on our hotline number 9717683838. You can write us on feedback@franchiseindia.in. Thank you everyone for joining the webinar. Thank you all. Thank you.